ओके ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज फ्रॉम ग्रेविटेशन। सो लास्ट टाइम के लेक्चर में, कल के लेक्चर में हमने कुछ एमसीक्यूज देखे थे। यस, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। ओके ओके सो yes, just read the question number 22. The gravitational intensity at a point on the surface of a planet is, तो देखो सरफेस पे कितना होता है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, जरूर ए उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यस ओके, so A will be the correct option, gm upon r square. This will actually be the intensity of gravitational intensity at the surface of a planet, right? चलो ठीक है, so next one is 23 question. Gravitational potential at a height h is minus 9.8 into 10 raised to 6 joule per kilogram, correct है? Then what will be the value of h? Okay, so देखो next step है gravitational potential at a height. What is the formula for the gravitational potential at a height h above the surface? You have seen last time the gravitational potential in general due to a point mass at a distance r from it is given by v is equal to minus gm upon small r, correct है? And here we can say that this small r can actually always be replaced by r plus h. If suppose we consider the radius of the planet itself to be r and the height to be h, then we can say this small r will actually be r plus h, and hence we can write this formula as minus gm upon r plus h, correct है? Yes, but what is given here is the gravitational potential at a height h above the surface is given to be 9.8, minus 9.8, right? So just put this minus 9.8 joule per kilogram here and minus gm as it is, and r plus h is kept as it is. What else is given here? Just check. देखो कैपिटल R का वैल्यू दे रखा है 6400 किलोमीटर, G का भी वैल्यू दे रखा है और M का भी वैल्यू दे रखा है 6 into 10 raised to 24 kilogram. Okay, so if we just use all these values here, then we can get minus 9.8 which is kept as it is. अच्छा माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, minus sign will just get cancelled, no doubt, and this will be actually equal to gm upon r plus h, where g is nothing but 6.67 into 10 raised to minus 11 and m is actually 6 into 10 raised to 24 mass of the earth, and here capital R which is, अच्छा चलो ठीक है r plus h को वैसे ही रखेंगे, no doubt, so that we can find out r plus h first and then we'll try to find out h finally. So अभी यहाँ पे अगर हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे, इस r plus h को अगर उस तरफ लेके जाएंगे और इस 9.8 को अगर इधर नीचे लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा, देखो ठीक से r plus h is equal to, अच्छा इस 6.67 को है ना, याद रखो ठीक से 6.67 can I always be written as 20 by 3, you know it is, ये बात याद रखो ठीक से 20/3। वैसे भी देखो अगर 20 को 3 से डिवाइड करके देखो तो कितना आता है 6.6666 रिकरिंग आता है, ठीक है ना? सो वी कैन राइट इट एज 6.67, सो 6.67 मतलब ही 6.666 रिकरिंग, ठीक है? तो इसमें ये 6.67 को अगर हमने 20/3 लिख दिया तो फायदा ये होगा कि अगर कोई दूसरा नंबर यहाँ पे 3 के मल्टीपल में है, जैसे यहाँ पे 6 है, तो वो कैंसिल हो जाएगा 3 के साथ, ठीक है?
तो 20/3 into 10 raised to minus 11 into 6, and that is multiplied by 10 raised to 24, and that is to be divided by 9.8, which can also be taken as 10 approximately. So what happens here is 3 gets cancelled with this 6, leaving behind 2, and hence we get this 40 into 10 raised to, what is this, minus 11 in plus 24 becomes 13, right? And that is divided by this 9.8, but 9.8 is approximately 10, करेक्ट है? तो इसको 10 लिख देंगे, तो ये 0 0 कैंसिल होकर हमको मिलेगा क्या, सिंपली 4 into 10 raised to 13, बराबर है? यस। अच्छा, 9.8 into 10 raised to 6 है, देखो इधर यहाँ पे, ठीक है, 10 raised to 6 भी तो है, don't forget that, so we have to put it there. तो 9.8 सिर्फ 9.8 नहीं है, 9.8 into 10 raised to 6 भी है, ओके, तो यहाँ पे भी है वो, यहाँ पे भी है वो, याद रखो ठीक से, जिससे हमको ये मिलेगा कि 10 raised to 6 ऊपर जाके फिर 10 raised to 13 minus 6 क्या बनता है, so 13 minus 6 becomes 10 raised, yes, so this is 10 raised to 7, 10 raised to 7. So 4 into 10 raised to 7 meter is going to be the value of r plus h. But don't forget again that we want to find out h here. So h can be written to be equal to 4 into 10 raised to 7 minus r, that is capital R, that is the radius of Earth. Correct? Hai? So that we can get this h, that is equal to 4 into 10 raised to 7 minus r, that is 6,400 किलोमीटर, करेक्ट है? तो 6,400 किलोमीटर मतलब कितना हो गया वो, 64 into 10 raised to 5 मीटर हो गया. Yes, so if we want to solve this, we have to express this as 400 into 10 raised to 5, क्योंकि यहाँ पे 10 raised to 5 है इधर, तो यहाँ पे भी हमको 10 raised to 5 लाना होगा, तो उसके लिए हमको यहाँ पे इसको 400 एक्सप्रेस करना होगा, minus 64 into 10 raised to 5 as it is. देखो ये सीखो इसको ठीक से अच्छी तरह से, नहीं तो कोई बच्चे क्या करते हैं, ये 10 raised to 7 minus 10 raised to 5 मतलब 10 raised to 2 कर लेते हैं और इन दोनों को सेपरेट सब्ट्रैक्ट करते हैं. दैट इज नॉट टू बी डन, रिमेंबर दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग. ओके, तो ऐसे कभी पावर्स का सब्ट्रैक्शन नहीं होता है. हाँ, अगर डिवाइड करते हैं तो पावर का सब्ट्रैक्शन होता है. तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं दो नंबर्स को, तो उनके जो कॉमन पावर्स है वो हमको कॉमन निकालने पड़ते हैं. तो यहाँ पे हमको 400 minus 64 और ये 10 raised to 5 हमको कॉमन निकालना होगा, करेक्ट है? जिससे हमको ये मिलेगा फाइनली 336 and that is multiplied by 10 raised to 5 meter, which can be written in terms of kilometer. तो इसको किलोमीटर में अगर रखना है तो क्या बनेगा, 33600 and that is going to be in kilometer, क्योंकि 10 raised to 5 can be written as 10 raised to 3 into 10 raised to 2, करेक्ट है? तो 10 raised to 2 into 10 raised to 3 ऐसा लिख सकते हैं इसको हम. तो ये 10 raised to 2 जो है उसकी वजह से यहाँ पे 2 0 आ गए, और ये 10 raised to 3 है तो वो यहाँ पे किलोमीटर बन गया, तो इसलिए इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. सो द फाइनल आंसर विल एक्चुअली बी 33,600 kilometer. Let us check the options. Yes, 34,400 kilometer. We have approximated 9.8. Just remember, हमने यहाँ पे 9.8 के बदले इधर 10 ले लिया, करेक्ट है? तो उसकी वजह से हमको आंसर जो है थोड़ा सा कम मिल रहा है. But if we would have taken this 9.8, then we would have got the answer just greater than this, slightly greater than this, which must be like this only. तो ये जो 34,400 किलोमीटर है, that should be the correct answer. चलो ठीक है, next one, ratio of the velocity of satellite Yes, the ratio of escape velocity of satellite from the Earth's surface to the critical velocity revolving close to the Earth's surface is, it's √2:1. That's it. We have already proved it. Okay. Next is the acceleration due to gravity on the surface of Moon is 1/6 of that on the surface of Earth.
and the diameter of moon is 1/4 of that of the earth. If escape velocity of from the earth is 11 kilometer per second, then the escape velocity from the moon surface is, देखो ठीक से ग्रेविटी दिया हुआ है 1/6 और डायमीटर मून का दिया हुआ है 1/4. ओके, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, देखो ठीक से here suppose this is the moon, okay, and this is suppose the earth. Okay, what is given here is the gravity on the surface of moon is given to be 1/6 of the gravity on the surface of earth, right? ये सबसे पहली बात दिया है. और दूसरा दिया है कि रेडियस, ओके, रेडियस ऑफ मून, जस्ट चेक, रेडियस ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर 1/4 है, मतलब ठीक है ना, रेडियस भी 1/4 ही होगा जरूर, तो इसलिए रेडियस ऑफ मून इज गिवन टू बी 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. ओके, तो ऐसे हालत में फिर अभी देखो ठीक से कि अभी इसकेप वेलोसिटी जो है मून का, इसकेप वेलोसिटी मतलब vm, उसको हमको निकालना है, इज हाउ मेनी टाइम्स टू दैट ऑफ द इसकेप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, जो कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है. तो वो हमको पूछा है, vm निकालना है हमको. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन escape velocity, gravity and radius? we know already that escape velocity का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ 2gm अपॉन कैपिटल R के बराबर हुआ करता है, करेक्ट है. लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी तो है ही नहीं, तो उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस gm को gr स्क्वायर के बराबर रख देंगे. if we put this gm as gr square, then we can just modify this formula for escape velocity as root of 2 times of g into r square divided by r, correct है. So that this r gets cancelled and what we are left with is escape velocity is simply equal to root of 2gr. Yes, and now we have to consider that we want to find out the escape velocity of, अच्छा ये फॉर्मूला हम दो बार यूज करेंगे, ओके, एक फॉर मून, ओके, और दूसरी टाइम फॉर अर्थ. ओके, अगर ये फॉर्मूला हमने दो बार यूज किया तो मून के लिए अगर यूज किया तो हमको क्या मिलेगा, vm, जो कि रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ gm इंटू rm के बराबर रहेगा. और दूसरी तरफ हम यूज करेंगे अर्थ के लिए, तो हमको मिलेगा अर्थ के सरफेस से इसके वेलोसिटी, जो कि रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ge इंटू re, करेक्ट है. यस, तो अभी इसमें अगर इन दोनों को अगर हमने डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, देखो, तो vm अपॉन ve will actually become equal to root of 2 gm into rm upon root of 2 times of ge into re, करेक्ट है. जिसको अगर हमने यहाँ पे 2 कैंसिल कर दिया तो उससे हमको मिलेगा vm अपॉन ve which is going to be equal to root of, तो यहाँ पे आएगा gm अपॉन ge into rm upon re, correct है. So that we can just get this as root of, what is this, gm upon ge कितना है, अगर ये ge को हम नीचे लेके जाएंगे तो ये 1/6 हमको मिलेगा उसका रेशियो, करेक्ट है. तो इसलिए यहाँ पे हम 1/6 डाल सकते हैं डायरेक्ट. यस, एंड एट द सेम टाइम हियर rm upon re, हाउ मच इट मस्ट बी, इट्स गिवन टू बी 1/4. देखो ठीक से यहाँ पे अगर इस re को नीचे लेके जाएंगे ना इधर, तो हमको ये re का वैल्यू, rm अपॉन re का वैल्यू मिल जाएगा 1/4, जो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे एज इट इज, सो दैट वी कैन गेट दिस सिंप्लीफाइड एज रूट ऑफ 1/24, करेक्ट है. इससे हमको ये पता चल रहा है कि vm अपॉन ve is actually going to be equal to 1/√24, and 24 can be written as 4 into 6, right? So if we write it as 4 into 6, then vm becomes actually equal to 1/2√6 into ve, and ve is already given there. कितना दिया है ve का वैल्यू, 11, करेक्ट है. So finally we are going to get this vm as 11/2√6 as a final thing. That is going to be the correct answer. Let us check. Or yes, just 11/√24. It's okay. This is also going to be the correct option. So B will be the correct option. Remember correctly. Yes.
the velocity of satellite revolving close to Earth is v. In order to make the satellite on Earth free from gravitational field, required increase in velocity in percentages is, we have already proved it in the theory, if you remember, 41.4%. ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है एंड कैन जस्ट प्रूव इट. अच्छा, एक बात यहाँ पे और समझो इसमें ठीक से कि ये पूरा जो हमने किया, ये पूरा, it is just a waste of time because we can solve it in a fraction of seconds. See how? एक सेकेंड में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. कैसे देखो, once you arrive at this formula which connects G and R with VE, तो G और R का फॉर्मूला जो है वो VE के फॉर्म में, ये फॉर्मूले के तरफ अगर हम पहुंच गए, एक बार ये फॉर्मूला अगर हमको पता चल गया, देखो ठीक से, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे कॉपी करेंगे. VE, सॉरी हाँ, VE मतलब ही escape velocity is going to be equal to root of 2 times of G into R. What does it mean? We can say that this VE मतलब escape velocity is proportional to root of G and R. करेक्ट है. तो अब यहाँ पे देखो कि मून का जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से 1/6 है. मून का रेडियस अर्थ के रेडियस के हिसाब से 1/4 है. तो मून का escape वेलोसिटी अर्थ के escape वेलोसिटी के हिसाब से कितने टाइम्स है, ये निकालने के लिए सिंपली हमको इस G के बदले 1/4 डालना है और इस R के बदले 1/6 डालना है और रूट वैसे ही रखना है. एंड दिस फैक्टर विल गिव अस द नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क हियर. ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे जो डालने का वैल्यू है वो हमको यहाँ पे मिलने वाला है. तो कितना मिल रहा है हमको यहाँ पे, देखो ठीक से, तो हमको मिल रहा है 1/√24. and if you put it here, then we can immediately get that the escape velocity due to the moon is actually going to be 1/√24 times the escape velocity from Earth. Correct? And escape velocity of Earth is already 11. So if you put this 11th here, then we can directly get the answer, that is 11/√24 as it is, as we have already got it here. तो जो हमको already मिला हुआ है यहाँ पे. Yes, ठीक है. So this is the short trick you have to remember. What we have to do is, जितने टाइम्स ग्रेविटी बनता है, जितने टाइम्स रेडियस बनता है, तो वो यहाँ पे डाल दो, तो वेलोसिटी कितने टाइम्स बनेगा तो वो तुमको मिल जाएगा आराम से. ओके, रिमेंबर दिस स्टेटमेंट अगेन, आई विल रिपीट अगेन. जितने टाइम्स रेडियस बनता है, जितने टाइम्स ग्रेविटी बनता है, वो उनके बदले डाल दो और इस 2 को कैंसिल कर दो. ये 2 तो कुछ टाइम्स नहीं बन रहा है ना, 2 चेंज नहीं हो रहा है. तो जो जो वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, तो जितने टाइम्स वो चेंज हो रहे हैं, तो उनके बदले उनके वैल्यूज डाल दो. तो उससे जो हमको मिलेगा, तो वो ये रिजल्टेंट क्वांटिटी है v, वो कितने टाइम्स चेंज होगा वो हमको तुरंत मिल जाएगा. यस. और रही बात अभी इस क्वेश्चन की कि बाय व्हाट परसेंट द एस्केप क्रिटिकल वेलोसिटी हैज टू बी इंक्रीज्ड. तो इसका मतलब हमको इन शॉर्ट ये निकालना है कि VE इज इक्वल टू VC प्लस व्हाट परसेंट. ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ VC ओनली. ये व्हाट है, तो ये हमको ये व्हाट निकालना है. और वी कैन से इट विल बी x. सपोज इसको अगर हम सपोज x से डिनोट कर देंगे, तो वो x हमको निकालना है सपोज. ठीक है, कि बाय व्हाट अमाउंट, बाय व्हाट परसेंट द एस्केप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी, दैट इज टू बी फाउंड आउट. तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो हमको ऑलरेडी पता है कि VE इज √2 टाइम्स ऑफ VC, राइट. तो VE can be written as 1.414 into VC, which can also be written as 1 plus 0.414 into VC, which can also be written as VC plus 0.414 into VC, which can also be written as VC plus, here it is 41.4 upon 100 into VC, and this 41.4 upon 100 stands for 41.4% of VC, and that is the answer. That means VE, that is the velocity to escape, is going to be 41.4% greater than the velocity, critical velocity already it has here. So that's why we can say that here the 41.4 will be the correct option. Just read the question again. The velocity of satellite revolving close to Earth is V. It's already given. And in order to make the satellite free from the Earth's gravitational field, required increase in the velocity in percentages is. Okay.
Okay, so see here, the escape velocity of the body projected vertically upwards from the Earth's surface is 11.2 km per second. If the body is projected in a direction making 30-degree angle to the vertical, then its escape velocity in this case will be, it's going to be 11 only. It's going to be the same only. Say why? Because escape velocity has to do with the energy. Okay, escape velocity मतलब होता क्या है? It is the kinetic energy which is required for its removal. मतलब suppose ये अर्थ है, तो यहाँ पे हमको इधर से इधर इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए, मतलब इधर से इधर तक लेके जाने के लिए कितना काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी हमको उसको देना है जो कि बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होता है। तो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर का काइनेटिक एनर्जी अगर हमने उस बॉडी को दे दिया तो दे दिया, वो फिर कौन से भी डायरेक्शन में दे दिया तो भी चलेगा, तो इट डजंट मैटर, इट्स गोइंग टू एस्केप ओनली। तो इसलिए किसी भी डायरेक्शन में उसको हम थ्रो करेंगे, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या वर्टिकली अपवर्ड्स, doesn't matter, it's going to escape if its kinetic energy is exactly same as the binding energy here, remember. So escape velocity is the velocity which is to be projected to the body or given to the body so that its kinetic energy becomes exactly equal to its binding energy. अगर उसका kinetic energy binding energy के बराबर है तो डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, डायरेक्शन कौन सा भी हो तो भी उसको अगर बाइंडिंग एनर्जी के जितना काइनेटिक एनर्जी अगर मिल जाता है तो इट्स गोइंग टू एस्केप, नो डाउट। देन अगेन हियर 28th क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ मास m orbiting at height h equal to the radius of earth is given by, so what will be the kinetic energy of the body of mass m orbiting at a height equal to the radius of earth? ओके, तो देखो ठीक से, अगर अर्थ के जितने रेडियस के बराबर का हाइट अगर है तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया टोटल, सॉरी, तो इट बिकम्स 2r, करेक्ट है। समझो ये अर्थ है, तो अर्थ का जितना भी रेडियस है उतने ही रेडियस पे जो उसकी उतने ही हाइट पे अगर कोई बॉडी यहाँ पे है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रेडीमेड फॉर्मूला है तुम्हारे पास, G इंटू m इंटू स्मॉल m अपॉन 2 टाइम्स ऑफ r प्लस h, याद है। तो अगर यूज करेंगे तो हमको मिलेगा G इंटू m अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2r, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, h इज सेम एज r हियर, सो h के बदले अगर हम r डाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा, so it will become r plus r, that means it will be 2r, correct है। so we can say that this will be g m square upon 4r, that is going to be actually the kinetic energy। g, अच्छा, it's we want it in terms of small g, so let us see, इस कैपिटल gm को, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी gm कैन ऑलवेज बी रिटन एज g इंटू आर स्क्वायर, करेक्ट है। तो अगर ये हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो, तो इट विल बी g इंटू आर स्क्वायर इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय 4r, so that this r will get cancelled once and what we are left with is simply mgr upon 4, which is going to be the correct option, mgr upon 4, so D will be the correct option। Yes, just 29th, the escape velocity from the surface of earth is ve, the escape velocity of us from the surface of a planet whose mass and radius are 3 times to that those of the earth will be, now just use this short trick here। अब यहाँ पे देखो ठीक से, mass and radius of that planet is going to be 3 times to mass and earth of the mass and radius of the earth, correct है। तो देखो ठीक से क्या हम करेंगे यहाँ पे, yes, we know that escape velocity is given by root of 2gm upon capital R, correct है। तो अभी देखो, mass of the planet is given to be what, 3 times of the mass of earth, right, and at the same time radius of the planet is also given to be 3 times of the radius of earth, right, and we want that escape velocity of that planet, मतलब vp उसको हम बोल देंगे, is how many times to that of the escape velocity of earth, okay। तो ये निकालने के लिए, ये क्वेश्चन मार्क के अंदर जो साइन है वो निकालने के लिए हम क्या करना है, हमको
तो सिंपली हमको ये जो m है और r है उसके बदले ये 3 और ये 3 डालना है, बस खत्म। देखो इससे क्या होगा, एंड 2 एंड g आर जस्ट कॉन्स्टेंट्स, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। सो व्हाट वी कैन से इज, ये क्वेश्चन मार्क के जगह पे जो वैल्यू आएगा तो वो रहेगा रूट ऑफ, तो m के बदले डाल दिया 3 और r के बदले डाल दिया 3। इससे क्या होगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा रूट ऑफ 1, मतलब 1। What does it mean? This 1 is the value which is to be put here in the place of question mark here. So if we remove this question mark and put this 1 here, then what we get here is Vp is equal to 1 times of V. What does it mean? Vp is going to be same as V. क्योंकि देखो मास 3 टाइम्स हो गया, रेडियस 3 टाइम्स हो गया, तो फर्क क्या पड़ेगा, रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, रेशियो तो सेम ही रहेगा। और उसकी वजह से यहाँ पे Ve के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। Vp will be same as Ve only. This is we have to understand. So answer is Ve only. Yes. Question number 30. If the weight of a body is 100 Newton on the surface of Earth, then its binding energy on the surface of Earth is. Okay, so weight of the body is given and we want to find out its binding energy. It's very easy. See here, binding energy is nothing but Gmm upon 2 times of R plus H, as we have just seen. But this is not the binding energy of a body which is just kept. यहाँ पे क्या दिया हुआ है, the weight of the body is 100 Newton on the surface of Earth. मतलब weight दिया हुआ है, मतलब बॉडी जो है वो रखा हुआ है, ये इसमें से समझो। तो जब बॉडी रखा हुआ होता है तो उसका जो बाइंडिंग एनर्जी है, तो उसके फॉर्मूला के अंदर ये 2 नहीं आता, याद रखो ठीक से। So its binding energy will be given by simply Gmm upon R. That's it. And if you want to express it in terms of small g, then we have to replace this capital Gm by G into R square. So that if you replace this value here, then we can get this as G into R square into small m upon R. So that is R just gets cancelled. And what we are left with is mgr. Okay, so this is going to be the binding energy of a satellite or any body which is kept on the Earth's surface. But here we can see that this mg, what does it stands for? It is nothing but the weight of the body. So if you put it here, then we can get this binding energy to be simply equal to weight into radius of Earth, correct? And if weight is replaced by 100 Newton, which is given here, and radius of Earth is also to be replaced, but just check the options, are they in terms of R? No. So it will be 6,400 किलोमीटर ना, तो किलोमीटर का 10⁻³ यहाँ पे आ जाएगा, जिससे हमको मिलेगा 64 इंटू, ओके 64 इंटू ये 2 जीरोस और ये 3, मतलब ये 7 हो गया, तो इसलिए वो आएगा 10⁻⁷। और we can also write it as 6.4 into 10⁸8 anyways. Just check 64 into 10⁷7. So B will be the correct option. Okay. Yes. Then it is the maximum value of gravitational potential is. What can be the maximum value of gravitational potential? It can be infinity, which happens to be at the center of Earth. In order to increase the escape velocity 10 times of the present value, the Earth's radius should be compressed to. तो देखो ठीक से, अगर हमको escape velocity 10 times बढ़ाना है, तो देखो escape velocity का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ 2gm अपॉन कैपिटल R, ये है। तो अभी इसको अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमको मिलेगा Ve स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन R। अभी R हमको निकालना है, तो R को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह से 2gm अपॉन Ve स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो ठीक से, if you want to make this escape velocity 10 times, that means we want that escape velocity, new escape velocity should be actually 10 times greater than the original escape velocity. So we have to compress the mass of Earth in such a way, in that way. So mass of Earth is going to be the same, but we have to just compress it to the small radius, so that escape velocity will become just 10 times of the present value. तो उसके लिए हमको रेडियस कितना कंप्रेस करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे अगर हमने Ve के बदले 10 अगर डाल दिया, ये 10 यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या बनता है, 100 बनता है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर Ve को हमको 10 टाइम्स करना है, तो उसके लिए R को क्या करना पड़ेगा,
1/100 टाइम्स करना पड़ेगा. So we can conclude that the new radius of Earth should be 1/100 times to that of the original radius of Earth here. And what is the original radius of Earth here? It is 6,400 kilometer, right? So if it is to be made 1/100 times, then how much it will be? Actually, it will be 64 kilometer only. So if we compress the Earth so as to up to the 64 kilometer only, then we can be able to get the escape velocity of Earth to be 10 times of the its present value. Okay. Next is the work done while taken a body of mass 1 kilogram from the Earth's surface to the height equal to the radius is. Yes. So how we can get the work done in order to lift the body from the surface of Earth to the रेडियस हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ. तो ये जो आर एच है वो आर के बराबर रहने वाला है. तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बॉडी को लेके जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे? तो देखो दैट वर्क डन विल एक्चुअली बी इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट हाइट माइनस potential energy at the surface. Okay, always remember the work done to bring the body from A to B will be the change in potential energy of the body between this point and this point here. तो इन दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो वर्क डन के बराबर रहने वाला है. तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट h above the surface? उसके लिए जनरल फॉर्मूला हमारे पास है GMM upon R plus H minus obviously. And here the work done, the potential energy at the surface of Earth is given by the formula minus GMM upon simply R. सरफेस पे ना तो H0 होगा. यस, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं. ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पे फ्रंट में ले लेंगे. तो इससे वो बनेगा GMM अपॉन कैपिटल R माइनस GMM अपॉन R प्लस H. But here H is given to be same as R, करेक्ट है? उन्होंने दिया हुआ है कि हाइट इज इक्वल टू द रेडियस. तो अगर हमने ये वो डाल दिया यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा? तो GMM अपॉन R माइनस GMM अपॉन 2R, जिससे अगर यहाँ पे 2 है तो 2R is the LCM. So in order to make this 2R here, so we can multiply divided by 2, and what we get is, so 2 GMM minus GMM comes out to be single GMM upon 2R kept as it is. But if you want it in terms of the small g, then GM has to be replaced by GR square. So that we get this G into R square into M upon 2R. So that RR gets cancelled and we are left with W is equal to half mgr, so that M can be replaced. Okay, you have to find it out. Okay, so let us try to solve this further. So mass of body दिया है क्या? Check करो एक बार. Work done while at body of taken mass of 1 kilogram. Okay, हाँ, तो 1 kilogram दिया है ना body का mass, तो it's okay. We can just put this M as 1 here, and G तो हमको पता ही already 9.8. We can take it as 10 approximately. Is actually 64 into 10 raised to 5. 6,400 किलोमीटर होता है ना वो, तो 64 into 10 raised to 5 बन गया ये. अभी इसको अगर हम थोड़ा रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो 2 1s are, and here it becomes 2 32s are, and this 9.8 is approximately written as 10. So we can write it as 10 into 32 into 10 raised to 5. That means it's going to be 32 into 10 raised to 6, correct hai? And that is going to be in joules. Okay, so 32 into 10 raised to 6 joule is going to be the kinetic energy. Yes, so we can write it as 3.1 into 10 raised to 7. It's okay. Okay, ये देखो यहाँ पे 32 को into 10 raised to 6 लिखा या 3.2 into 10 raised to 7 लिखा, एक ही बात है, no problem. Okay, 34th one, a man is carrying a load equal to its own weight on his head. If he jumps from roof of a building during his fall, the weight experienced by the man will be 0.
just because he will experience weightlessness, because both of them are getting accelerated in the same direction, in the same with the same acceleration, and that's why the person will not experience any weight. The force of attraction is balanced by the weight of the person. Okay, just check the answers. Balanced. C is going to be the correct option. Okay, no, repulsion nahi. Force of attraction is equal to the necessary centripetal force. B is going to be the correct option. Okay. Next is an iron ball and wooden ball of the same radius are released from the same height h in the vacuum. The time taken by both the balls to reach the ground will be equal. Remember, अगर यहाँ पे हम एटमॉस्फेयर का इफेक्ट अगर नहीं कंसीडर करते हैं तो वो दोनों का जो टाइम है वो इक्वल होगा, एग्जैक्ट इक्वल. ठीक है. If the radius of Earth were to shrink by 1% of its mass remaining the same, then acceleration due to gravity on the Earth's surface would, just see here, acceleration due to gravity का फॉर्मूला क्या है? G is equal to capital G m upon r square. करेक्ट है? तो अभी सोचो, अगर मास कांस्टेंट रखा तो मास कांस्टेंट होने से G is inversely proportional to r square ना. तो अगर r को हमने 1% से बढ़ा दिया, देखो ठीक से यहाँ पे, if r is increased by 1%, then what will happen is G will decrease actually by 2% here. Decrease, yes, decrease by 2%. ये भी हमको पता चल गया, 2% से डिक्रीज होगा, ये भी पता चल गया. तो उन्होंने तो सिर्फ डिक्रीज या इंक्रीज ही पूछा है, so it will decrease obviously, no doubt. Then again, if the acceleration due to gravity at Earth is g and mass of Earth is 80 times that of the moon and radius of Earth is 4 times that of the moon, then the value of g on the surface of moon will be, no doubt, we can find it out easily. Yes, see here, क्या दिया हुआ यहाँ पे कि ये g का जो वैल्यू है हमको पता है कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर हुआ करता है. करेक्ट है? अभी पढ़ो क्वेश्चन फिर से. The acceleration of gravity at the surface of Earth is g and mass of Earth is 80 times to that of the moon and radius of Earth is 4 times to that of the moon. Then the value of g on the surface of moon will be. करेक्ट है? So see here, मतलब अगर अर्थ का रेडियस, मतलब sorry, mass of Earth is given to be 80 times to that of the mass of moon. Correct है? And radius of Earth is given to be 4 times of mass of moon. Correct है? Sorry, radius of moon. Yes. तो ऐसे केस में देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं कि mass of moon is actually 1/80 times of the mass of moon Earth. Correct है? और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि radius of Earth, radius of moon is 1/4 of the radius of Earth. Yes. तो अगर हमने ये वैल्यूज यहाँ पे यूज किया तो उससे हमको क्या मिलेगा? देखो ठीक से, हमको निकालना क्या है कि मास ग्रेविटी ऑफ मून इज हाउ मेनी टाइम्स टू दैट ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, वो हमको निकालना है. राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो देखो ठीक से, क्योंकि देखो मास कितने टाइम्स होने जा रहा है मून का? 1/80 टाइम्स होने जा रहा है. करेक्ट है? और रेडियस कितने टाइम्स होने जा रहा है? तो वो 1/4 होने जा रहा है. तो ग्रेविटी कितने टाइम्स होगा? तो वो हम ढूंढ के निकाल सकते हैं आराम से. इट विल बी 1/80 डिवाइड बाय 1/4 का होल स्क्वायर टाइम्स. करेक्ट है? इसको सॉल्व करो तो इससे हमको मिलेगा 1/80 इंटू इसका रेसिप्रोकल जो कि बनता है 16:1, राइट? And hence 16 ones are 16 fives are, so it becomes 1/5. So 1/5 of the gravity of Earth. मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे डालने का वैल्यू कौन सा है हमारा? 1/5. So we can say that the gravity of moon will actually be 1/5 of the gravity of Earth here. So this is going to be the correct option. G/5 will be the correct option, which is present here in option B here. Yes. Okay, so rest of those questions we'll do tomorrow. And yes.
Okay, चलो ठीक है. So let us stop here. Thank you all of you.